waves. The mechanism by which energy is transferred from one point to another point, but no material object. In waves, the energy is transferred from one place to another place, but there is no motion is occur, or there is no net motion of the particle is occur. That is called waves. वेव्स के ज़रिए एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन कर सकती है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है, लेकिन मटेरियल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर साकिन होती है। इसको हम वेव्स कहते हैं। इसका अनदर डिफिनीशन ये भी है, अ वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट नेट पार्टिकल मोमेंट। अ वेव्स is actually the disturbance in a medium. As we know that each and every medium is made of a particle, but when these particles are disturbed by some forces, by some motion, then the waves is created. जब हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं तो इसकी वजह से वेव्स पैदा होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक मीडियम जो है मीडियम जो है पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन जब ये पार्टिकल किसी फोर्स की वजह से डिस्टर्ब किया जाए तो इससे वेव क्रिएट हो सकती है। नाउ हाउ वी कैन प्रोड्यूस अ वेव्स? टू प्रोड्यूस अ वेव्स, फॉर दिस पर्पस वी कैन डू एन एक्टिविटी। द वेव्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ स्टैंडिंग वाटर, देन अ सर्कुलर रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड वाटर मूविंग टुवर्ड द साइड। अगर हम किसी स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सटेंडिंग वाटर में ड्रॉप कर ले तो इसकी वजह से सर्कुलर रिपल्स जो है वो वाटर में पैदा हो सकती है, और ये रिपल्स जो है साइड्स की तरफ मोशन करती हैं। दरअसल में ये रिपल्स वेव्स है, और ये वेव्स जो है एनर्जी को जनरेट करता है। सम वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट एंड सम डू नॉट नीड a material medium for the propagation. It means that waves is produced in material medium, but some waves is produced without a material medium. बाज़ वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी वास्ते की ज़रूरत होती है, और बाज़ वेव्स ऐसी भी हो सकती है जिसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो बग़ैर मीडियम भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं। So there are some types of waves. Now we will define these types of waves. Number first, mechanical wave. Mechanical waves is that which propagate through a material medium such that solid, liquid or gas. Mechanical waves के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसके लिए किसी वास्ते की ज़रूरत होती है। ये बग़ैर किसी मीडियम, बग़ैर किसी वास्ते के प्रोपगेट नहीं हो सकती। और ये मटेरियल मीडियम जो है ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसेस भी, यानी इसके लिए कोई मीडियम ज़रूरी होती है ताकि ये प्रोपगेट कर सके। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स एंड द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज साउंड वेव्स इज ट्रेवल एंड गैसेस लाइक वी आर टॉकिंग, इट आल्सो ट्रेवलिंग एंड लिक्विड लाइक वाटर, इट आल्सो ट्रेवलिंग इन सॉलिड like in pipes or other steel. Second one is water waves. Water waves is also a mechanical waves which also required a material medium. String waves, which is always produced in a string or roof. There are two main types of the mechanical waves. Mechanical waves further दो किस्मों में डिवाइड की जा सकती हैं। नंबर फर्स्ट, ट्रांसवर्स वेव, when the particle movement perpendicular at right angle to the motion of the energy is known as a transverse wave. Transverse wave दरअसल में दे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है जिसमें पार्टिकल जो है मीडियम के पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर का मतलब है एट राइट एंगल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे हरकत करती है जिसकी वजह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपगेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल द वाटर वेव्स, इफ यू स्टडी द वाटर वेव्स, द वाटर पार्टिकल आर द वाटर वेव्स मूविंग अप एंड डाउन अबाउट इट्स मीन पोजीशन,
So it means that they can create or they can produce a transverse waves. And also, when a string is plugged to some support, and when we apply force on the another end of the string, then the string is oscillate up and down and produced a transverse wave. Second type of wave is longitudinal wave. What is longitudinal wave? In this type of wave, the particle motion is parallel to the direction of the propagation of the energy. And longitudinal waves actually the particle of medium moving in a straight way, not vibrate perpendicularly, but it can move parallel or straight, and in this way it can propagate energy. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेट हो सकती है, लेकिन पार्टिकल स्ट्रेट मोशन करती है. फॉर एग्जांपल, sound wave. Sound wave is a type of longitudinal wave. As we know, sound is moving in some medium like solid, liquid or gas. So the sound waves are moving in a straight way and they can propagate from one point to another point. Similarly, the spring waves. If we compress or stretch a spring, then it can produce a longitudinal waves. Similarly, pressure waves is also the example of longitudinal wave. Third type is electromagnetic wave. What is electromagnetic wave? This type of wave do not need any object medium for the propagation and can easily travel through a vacuum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा टाइप्स है वेव्स का जिसके लिए किसी मीडियम, किसी पार्टिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि स्टार्ट में हमने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव. सम वेव इज़ प्रोपगेटेड इन मीडियम एंड सम टाइप्स ऑफ वेव्स इज़ प्रोपगेटेड विद मीडियम. So now the electromagnetic is that types of waves which propagate without a material medium. It can travel in medium but also it can travel without medium. ये वास्ते में भी मोशन कर सकती है और बग़ैर वास्ते के भी मोशन करती हैं. यानी ये दरअसल में वैक्यूम में भी क्रिएट हो सकती हैं. They are produced due to the magnetic and electric field. Actually, electromagnetic wave is the combination of electric field and magnetic field. And this electric field and magnetic field is moving perpendicular to each other, and in this way it can propagate energy. The periodic change can take place in a magnetic and electric field. An electromagnetic wave travels through a vacuum at a speed of 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. इसका स्पीड कांस्टेंट होती है क्योंकि इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. ये हर एक मीडियम में हर एक जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से प्रोपगेट हो सकती है. इसकी एग्जांपल एक्सरेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, etc. These are electromagnetic waves which do not necessary any medium for its propagation. Thank you for watching the video. Please subscribe for more video.